Hello everyone, welcome to Botanyverse. Previous video रे आमे थालस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंजाई विषय जानथिले. आज आमे जानिबा फंगल सेल वॉल एंड न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई विषय रे. प्रथमे आमे जानिबा फंगल सेल वॉल विषय रे. The fungal cells are eukaryotic with distinct cell wall, cytoplasm and nucleus. तो फंगल सेल होची गोटे यूकारियोटिक सेल जहाँ भितर ट्रू न्यूक्लियस थाए with distinct cell wall. Cell wall कौन करे ना सेल को प्रोटेक्शन दबारे हेल्प करे. The cells may be uninucleate or multinucleate forming sinusoiding condition. तो फंगल सेल भितर न्यूक्लियस थाए केबे केबे गोटे न्यूक्लियस थाए ताको आमे यूनिन्यूक्लिएट कहबा. एटा सब कोठी देखा जाए ना ईस्ट रे देखा जाए. केबे केबे मेनी न्यूक्लियाई मध्ये थाती जाको आमे मल्टीन्यूक्लिएट कहबा. जेतेबेले मेनी न्यूक्लियाई थाए ताकू आमे कहबा सिनोसाइटिक कंडीशन. The nucleus contains one or more nucleoli. In some fungi, the nucleus contains a dense chromatin body surrounded by the nuclear envelope. न्यूक्लियस भितरे न्यूक्लियोलस थाए जहाँ राइबोसोम फॉर्मेशन ने हेल्प करे. आउ न्यूक्लियस भितरे क्रोमाटिन मटेरियल थाए जहाँ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करे. आउ ई क्रोमाटिन मटेरियल चारिपटे न्यूक्लियर एनवेलप सराउंड हेकी थाए. Cytoplasm is colorless and granular to reticulate in appearance. Cytoplasm होची colorless and granular fluid जहाँ भितर सेल ऑर्गेनेल गुड़ी को थाए. Cytoplasm contains many big but irregular vacuoles, whereas in higher members a single large vacuole is found which becomes central in position. Fungal cell vacuoles थाए. तो लोअर फंजाई मानकर कौन हुए ना बहुत सारा स्मॉल वैक्यूल्स गुड़ी को प्रेजेंट थाती किंतु हायर फंजाई रे वन लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट थाए. ग्लाइकोजेन मेनी एंजाइम्स ऑयल ड्रॉप्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. फंगल सेल्स कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन्स इंक्लूडिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus. The ribosomes are ETS टाइप. फंगल सेल बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल जमती माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी apparatus एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवडा थाए. आउ कोन थाए ग्लाइकोजेन थाए मेनी एंजाइम्स थांती ऑयल ड्रॉप्स थांती एवडा सब थांती. The cell membrane contains ergosterol that replace the cholesterol found in animal cells. तो एनिमल सेल जमती कोलेस्ट्रॉल थाए सेमती फंगल सेल ergosterol थाए जोटा कि फंगस रो सेल स्ट्रक्चर फ्लूइडिटी आउ परमिएबिलिटी मेंटेन करिवारे हेल्प करे. आपण माने एठी डायग्राम रे देखि परथिबे एटा होची गोटे फंगल सेल रो डायग्राम. तो द आउटर मोस्ट लेयर को हमें सेल वॉल कहबा जोटा सेल को प्रोटेक्शन और शेप दबारे सहायता करे. तो सेल वॉल रो भीतर थाए सेल मेम्ब्रेन. Inside cell membrane, cytoplasm is present. Cytoplasm होची कोन कलरलेस जेली लाइक सब्सटेंस जहाँ भितर सब सेल ऑर्गेनेल गुड़ा को सब थांती. तो एठी डायग्राम रे आपण माने देखि परथिबे साइटोप्लाज्म भितर अछि कोन न्यूक्लियस भितर न्यूक्लियोलस आउ माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी apparatus रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी apparatus राइबोसोम एगुडा सब थाए. एबे हमें जानिबा compositions of cell wall. Fungal cell wall structure and its position are very specific and important. Each cell has a cell wall outer to the cell membrane and it protects the cell and provide rigidity. The major components include chitin, glucans, mannoproteins, other polysaccharides, enzymes and structural proteins. प्रथमे हम जानबा chitin विषय रे. A long chain polymer of N-acetyl glucosamine provides rigidity and structural support analogous to cellulose in plant cell wall but stronger. तो फंगल सेल वॉल लो मेन कंपोनेंट्स होची chitin जोटा सेल को स्ट्रांग आउ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे. तापर हमन आसबो ग्लूकान्स. Mostly β-Glucans, especially β-13-glucan and β-16-glucan, form a fibrous network that gives the wall strength and elasticity, cross-linked with chitin and other components.
तो ग्लूकान्स होची ग्लूकोज रु तैयारी गोटे पॉलीसैकेराइड जोटा सेल को स्ट्रेंथ आउ इलास्टिसिटी दबारे सहायता करे। Mannoproteins, proteins with mannose rich oligosaccharides attached, that is glycoproteins, involved in cell wall remodeling, adhesion and immune evasion, mainly found in the outer layer of the cell wall. तो Mannoprotein सेल आउटर मोस्ट लेयर रे देखा जाए जोटा हेल्प करे सेल वॉल रिमॉडलिंग रे, एडिशन आउ इम्यून इवेशन ने हेल्प करे। अदर पॉलीसैकेराइड स्मॉल अमाउंट ऑफ galactomannose, alpha glucans and sometimes melanin in certain fungal species like Cryptococcus or Aspergillus. Melanin offers protection from environmental stress and host defense. Enzymes and structural proteins. Enzymes involved in cell wall synthesis and remodeling. GPI anchored proteins important for cell wall architecture. Layer arrangement of fungal cell wall from outside to inside केमती देखंतु प्रथमे आमर आसीबो Mannoproteins, then β-Glucans, then inside β-Glucans chitin present, then chitin पर आसीबो हमरो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एठी आपण डायग्राम रे देखि परथिबे आउटर मोस्ट लेयर होचे हमरो Mannoproteins, तापरे हमर आसीबो कोन Glucans, Glucans पर हमरो अछि chitin, and chitin पर हमरो सेल मेम्ब्रेन। एटा होची फंगल सेल वाला स्ट्रक्चर। या पर हमें जानिबा फंगल न्यूट्रिशन विषय रे। All fungi are chlorophyllous in nature, so they cannot synthesize their own food from inorganic matters like green plants. तो फंजाई मानकर क्लोरोफिल न थाए तो से माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंते नाही। They cannot also get the inorganic food from the soil due to their simple structure. Fungi utilize both organic and inorganic compounds as their nutrients. तो फंजाई मानकर बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल थिवर एमाने डायरेक्ट सॉइल लु खाद्य नै कि प्रस्तुत करि पारंते नाही। Depending upon the mode of nutrition, fungi may be classified into 4 important groups: saprophytes, parasites, symbiotic and predacious fungi. Saprophytes, the fungi which live on dead organic matters produced by the decay of animals and plant tissue are called saprophytes. तो माने dead आउ decaying organic matter रु खाद्य ग्रहण करंती। The good example of such saprophytes are mucor, rhizopus, penicillium, agaricus, morchella, etc. These excrete some enzymes that simplify the organic matters and which are then absorbed by the ordinary hyphae of the fungus that penetrate the substratum. Saprophytic fungi माने कौन करंती ना से बॉडी रो गोटे एंजाइम सिक्रेट करंती जोटा कि ऑर्गेनिक मैटर को सिंप्लीफाई करबे तांको हेल्प करे जहा द्वारा से माने न्यूट्रिएंट इजीली एब्जॉर्ब करि परिबे। देन आमे जानिबा पैरासाइट्स विषय रे। The fungi which grow on the tissue of living animals or plants host are called parasites. तो पैरासाइटिक फंजाई माने जो फंजाई माने जीवित प्लांट और एनिमल को ठारू फूड नै थांदी जहा ठारू फूड नै थांदी समानको हमें होस्ट बोली कहबा। पैरासाइट दी प्रकार थाए गोटे एक्टोपैरासाइट एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट हमें जानिबा एक्टो माने आउटसाइड the fungus having the mycelia outside the host are called ectoparasite. जेतोले फंगस रो mycelia टा host रो outside रे थाए हम ताको ectoparasite कहबा, whereas the fungus having the mycelia embedded in the host tissue is called as endoparasite. जेतोले फंगस रो mycelia टा host रो भितर थाए हम ताको endoparasite कहबा. In ectoparasites, certain cousin like Aprisoria develops on the surface of the host. From each aprisorium, a peg-like structure develops, which penetrate the host epidermal cells, giving rise to branched or unbranched absorbing organs called hostoria. तो एक्टोपैरासाइट रे कोन हुए ना फंजाई रो माइसिलियम होस्ट रो बाहर रहे किंतु फूड एब्जॉर्ब करिया पई होस्ट भितर गोटे स्पेशल स्ट्रक्चर पठाए जाको होस्टोरिया बोली कहबा। पैरासाइट फंजाई आल्सो क्लासिफाई इनटू some fungi. First आमे जानिबा localized fungi. In some fungi, mycelia remain confined to the
pustules and do not spread into the host tissue. Such fungi are called as localized fungi. तो localized fungi कौन ना माने होस्ट रो होल बॉडी रे स्प्रेड हुंदी नहीं माने किछि अंचल मात्र माने सेठी ग्रो करंती तो एमान को localized fungi बोली कहा जाए. Systemic fungus Ostilago that cause smart disease and the mycelia prevail in the whole of the plant. This type of fungus is called systemic fungus. तो ये फंजाई माने कौन करती ना होस्ट रो होल बॉडी रे स्प्रेड हो जाती फल पूरा प्लांट की पूरा होस्टा कौन इन्फेक्ट हो जाए. एग्जांपल होची ऑस्टिलोगो जोटा स्मॉट डिजीज करे. तापर हमरा आसबो ऑब्लिगेट पैरासाइट. There are parasitic fungi which live only on living host and are called as obligate parasites. They cannot live on dead organic matters and without the host. तो ये फंजाई माने केवल लिविंग होस्ट उपरे बंची पारंती डेड ऑर्गेनिक मैटर उपरे माने सर्वाइव करि पारंती नाही आ विदाउट होस्ट माने बंची परिबे नाही. एग्जांपल होची पॉक्सिनिया मेलामोस्पोरा एक्सेट्रा. देन हमरा आसीबो फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स. Some parasitic fungi which usually live in living host may adapt to saprophytic mode of life at times and they are known as facultative saprophytes. এই फंजाई माने साधारणतः पैरासाइट भाबे लिविंग होस्ट ऊपर रहंती किंतु जदि होस्ट मरि गला ताले डेड ऑर्गेनिक मैटर ऊपर सैप्रोफाइटिक भागे माने बंची पारंती. एग्जांपल होची टैफ्रिना. देन हमरा आसीबो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स. Some fungi usually lead a saprophytic mode of life, living on dead and decay organic matters, but under certain conditions, they parasitize suitable host. Such fungi are called as facultative parasites. साधारणतः ये फंजाई माने कौन करती ना सैप्रोफाइट भावे डेड ऑर्गेनिक मैटर ऊपर रहंती किंतु केतेक कंडीशन ने लिविंग होस्ट को अटैक करी पैरासाइट हो जाती. तो मैंने नॉर्मली सैप्रोफाइट थांदी किंतु समटाइम्स पैरासाइट हो जाती. एग्जांपल होचे हमर फ्यूसारियम आउ पाइथियम. देन हमर सिम्बायोटिक फंजाई. Some fungi live in close association with other plants with a mutual cooperation and benefit. This mutualistic association is called as symbiosis and the participants are known as symbionts. किछि फंजाई कौन करती ना अन्य प्लांट बा ऑर्गेनिज्म मानक सह क्लोज एसोसिएशन ने रहंती आ कौन करती ना दुहे दुही को बेनिफिट्स करती. ये जो रिलेशन टाको आमे कहबा सिम्बायोसिस रिलेशनशिप आ से मानक को आमे कहबा सिम्बायोन्ट्स. एग्जांपल होची लाइकेन्स एंड माइकोराइजा. लाइकेन होची सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी. फंगस कौन करे ना वाटर आउ मिनरल अब्जॉर्ब करे आउ एल्गी को प्रोटेक्शन दिए. ता बदल रे एल्गी कौन करे फोटोसिंथेसिस करी फूड प्रिपेयर करे आउ से फंगस को फूड दिए. तो दुई जनकर बेनिफिट करंती. तो याको आमे कहबा सिम्बायोटिक एसोसिएशन आउ फंगस आउ एल्गी को आमे कहबा सिम्बायोन्ट्स. माइकोराइजा are of two types, ectomycorrhiza and endomycorrhiza. When the fungus grow on the surface of the roots, it is called as ectomycorrhiza. जेतेबेले फंगस रूट रो बाहर सरफेस रे ग्रो करे ताको आमे ectomycorrhiza कहबा. When the fungus grow inside the roots tissue, it is called endomycorrhiza. जेतेबेले फंगस रूट टिश्यू भीतर ग्रो करे आमे ताको endomycorrhiza कहबा. Endomycorrhiza are also called vesicular arbuscular mycorrhiza (VAM ताको कहबा due to the presence of large vesicles and arbuscles with the plant cell. Then amara so predaceous fungi. There are some fungi which have developed mechanism to capture small animals like eelworms, rotifers, protozoa. Such fungi are called predaceous fungi. किछि फंजाई अछंती जो माने स्मॉल ऑर्गेनिज्म मानन को कैप्चर करंती आ समान को फूड हिसाब रे माने व्यवहार करंती. तो एमान को हमें प्रेडासियस फंजाई कहबा. Several species of fungi in the genera Arthropods,
Dactylaria are predaceous in nature. So this is for today. Thank you everyone. जदि वीडियोटी आपको भल लगी तेबे लाइक करंतु एंड सब्सक्राइब करंतु।